here to learn pivot table and good evening to one and all present here. Myself Gurjot Kaur, and today we are here to learn about pivot table and pivot table charts. So, uh, discussing revising about yesterday's content. I request everyone, if anyone is having any doubt, kindly clarify your doubts today itself and be focused, be active in chat, and let's continue. Thank you, sir. Thank you. Okay. Thank you, Gurjot, for the welcome. And good evening, everyone, and welcome to this session. Today, we are going to continue what we started yesterday. Yesterday, we had started a discussion on dashboard. If you have not attended the previous session, I have shared the YouTube link in the group. You can watch it after watching this session. Okay. And those who had attended, it will be a continuation of the previous one. Those who are attending today, I am sharing the file in the chat box. You can download this file. This is what we are going to use today. Okay. So before we start with the session, I will just brief you out what we did yesterday. So I'll be sharing my screen now, and I'll be taking you towards the journey of what we did yesterday and what we are going to do today. Okay. So today the discussion will be around pivot tables and pivot charts. That is the first step of creating a dashboard in Excel. Okay. So now I have shared my screen and I hope that it is visible to all. If it is visible, you can just type in yes in the chat box or visible in the chat box so that I come to know that it is visible. Yes. Great. Okay. So, yeah. So talking about what we did yesterday, and yesterday was also an open session. Today is also an open session. What we are heading towards is creation of a dashboard in Excel. Okay. Now, what a dashboard looks like. So those who have come here for the first time, that means you're not there yesterday. What you see or you're seeing on the screen is a dashboard image. Okay, it is an image. I can move it around. Okay, so this is the image of a dashboard which is being created in Excel. Okay, uh, and now you will see that there are various elements over it. There are different charts. One is a pie chart. This is a histogram. This is a table chart or heat map, you can say. This is a bar chart, and this is the donut chart. So there are 5 different charts which you can see. And can anyone name this one? Attrition by gender. Which chart is it? Can anyone tell me in the chat box? Can you identify and tell me what this chart is called? Have you seen or used or created some kind of chart, this kind of chart before? If you have, then I would like to know its name. Okay. So let me know if you know. Avnish, Gurjot, and Shrestha. All are right. It is called as a lollipop chart. Okay. It looks like a lollipop. Okay. So yes, you are right. It is called as a lollipop chart. Okay. So we have 2 items which are eatables and which people like. Okay. So one is lollipop and the last one is donut. Okay. So both names are derived from the sweets, you can say, lollipop and donut. Okay, so this is not the charts which you see in Excel or Tableau or Power BI. These are customized chart. You have to merge 2 elements together to create these charts. That is what we are going to learn today, what how to create different charts in Excel.
Okay, and what we did yesterday, if you watch yesterday's recording, or many of you were there in the previous session also, which happened yesterday. Okay, so we had discussed about the data. So this is the data which was there, which through which we had created, which will be creating this kind of a chart or a dashboard. Dashboard is something which is, you can say, a pictorial representation of data. So it represents the data in a pictorial manner so that you can derive all the meaningful information from the data, all the information which is necessary in presenting the various facts and figures to the management or the top level management. They are all there in this dashboard. Okay, so that is there one thing. Second thing is that this is the data which is there. Yesterday we had seen that there are 28 columns. This data is of 28 columns. Okay, and if I talk about rows, so there are 1525 rows. So you can see that there are 1525 rows in this data, and the last column that you see now, when I'm inside the table, or the data, it is showing the table headings. Okay, it is showing the headers of the data. Okay, and when I'm outside the table, it is showing me the alphabets. So till Z, till Z, we have 26 alphabets in English. So it is the 26th column. Z is the 26th column. Then after Z, in Excel, we have double A, AB, AC, AD. So there will be 27th, and this is the 28th column. So there are 28 columns in this particular data, and there are 1525 rows. What we did yesterday is we had discussed what are the different steps of creating a dashboard in Excel. I'll just briefly take you towards the steps of creating a dashboard. And I hope you remember the acronym which we used yesterday. So before I show the steps, those who were present yesterday, type in what is the method that we discussed to create a dashboard. I had given it a name. Shrishta is the first one to answer. Okay. Dave, Dave. Okay. And what was the movie which we discussed about yesterday? Which character, which has this character Dev, Dhadkan, correct? Yeah. So now these are the steps to create the dashboard, and you will be able to see those who are coming for the first time to the class. You will see these actors, and you will remember that the movie was Dhadkan. Okay. So why we have taken this movie poster over here? Because there is one character which is very famous, and he is like Dev. ओके, सो ये जो देव है, यहाँ से हमने इसको इंग्लिश वाला देव बना दिया, डेव. So Dave is the process to create a dashboard. Okay, and the first step is D, whereas D stands for discovering the data. So you discover the data. Then second is A, you analyze the data. Then is V, you visualize the data, and then you explore the different ways of displaying the data in an attractive manner. So these four steps are the different steps in creating a dashboard like this. So first you discover the data. So we see the data, what are different headers over there in the data, what fields are there. Okay. Then we analyze, we divide the data into two parts. One is called as dimension, and the other one is called as measure. So what is the dimension? Dimension is the parameter on the basis of which values are defined, which is qualitative in nature. Okay. Shrey has answered this. This was qualitative in nature, and measures are numerical data, or the numbers in the data which is expressed in terms of number, which is basically quantitative. Okay, so we did this exercise, and we divided all these fields into dimension and measures. Okay, now those who are attending today and did not attend yesterday, they might be having this feeling of something which is called as FOMO. Do you know what is FOMO? What is this word FOMO? Can anyone tell me in the chat box? What is this FOMO? Yes, please. Before we start discussing on, I want, what do you mean by this? Understand by this term FOMO. Has anyone answered?
Yeah, I have got one answer. Fear of missing out. Yes, fear of missing out. Okay. So, how many of you have not joined yesterday? Can you just raise your hands? How many were not there? I think Niti had missed out. Ria was not there. And who else? Krish, Narkar. Okay. And I don't know, is this HPPC? I think you had attended previous session, but yeah. Niti, you want to ask something? You had to raise your hand. Sir, you asked to raise hand who haven't attended the class. So, Okay. Ha ha ha. You have attended. Okay, you are not but attended. sir, I watched your video, Okay, great. yesterday's video. Very good, very good. So now you are out of that FOMO factor. You will not miss out anything because you have much watched. Those who have not watched, nothing to lose. Okay, you can watch now also. It has nothing to do with what we are going to do today. Okay, but I will touch upon the important points which I discussed yesterday. So you will not, you don't have to feel anything that you are missing out. Okay, just concentrate on what I am doing today. Okay, we are going to start something new today and which no one has done who had attended previous session also. So those who attended previous session, they don't have to feel special कि हम लोग ने कल तो किया था इन लोगों ने नहीं किया ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है everyone is at par now. So this is what we have the data. This data is about HR department of any organization, and there are different columns which is telling out the different parameters of the data, and on the basis of this we have to make a dashboard. Okay, now there are two ways of creating a dashboard. Once, if you have the visual in your mind, if you know what kind of information you want to present, then it becomes easy. If you do not have anything in your mind, then whatever comes to your mind you can just integrate it, and you can just pick and choose, this is information is relevant, this is not relevant and all. Okay, so there are 28 columns. Out of these 28 columns, we had divided the columns into row dimensions and measures. So how many dimensions were there? So if I take a count of this, there were 19 dimensions. Okay, and there were near about 10 measures. Okay, 19 dimensions and 10 measures. So now we will start building the dashboard today. We will not waste any more time and we'll start building the dashboard. So what is the first step in building the dashboard? Okay, so we'll have to create some pivot tables. Okay, but before we start with the pivot tables, before we create the pivot tables, we will do some calculations. Okay, so there are some part of the dashboard which is based out of calculations only. Okay, calculation based on some formulas and functions. So we will start with that. Then we'll come to the pivot table and pivot chart part of it. Okay, so I'm just showing you the dashboard again. See, you don't have to work on it with me. You just watch this video properly. Just be there, understand what is happening. Okay, and then you can try it on your own, and get back to me if you have any issues in understanding. Okay, so this is that part of the dashboard which is based on calculations. Okay, I will just crop. Okay, now one interesting part is that suppose this is the image, you have inserted an image in Excel and you want to remove the background. So you can just go to picture format. Okay, format picture. It will come when you are whenever your Excel has any picture. So this is the picture, this is the image. You click on it, you click on picture format. Okay, then you click on remove background. When you click on remove background, it will automatically remove the part which it will give you some options to remove the background. Okay, so you can change the format or something like that. Okay, now since this image there are some background and some this thing, so it will not show you proper output, but I can show you with different picture also. Okay, so that is one thing that can be done, but right now it is not giving us the proper output, so let leave it this way only. Okay, I can show you with some different illustration because that can be helpful whenever you are importing any picture into Excel, or whenever you want to use any picture into any presentation or something like that. You can just insert that picture and remove its background. Okay, for example, I do not have any such picture. Okay, I have this picture of mine.
Let me insert it. Okay. Now I want to remove the background from this picture. So what I have to do is I have to just click on this picture and then go to picture format and then click on remove background. Now see what happens is something has become pink and some has become this is the case. Okay. So in the corrections, when you see correction will just adjust the this thing, but you can basically select what to keep and what to remove. And where is that? Okay, let me just go ahead with this and see what we get as a result. Okay, so when you click on OK, you get only this part. Okay, it has removed the preview, all the different things, but it works properly. Today it is not working that properly, but yeah, you can apply different shadings and all this thing. You can pixelate pictures and all that is available in Excel. Okay, that was a different uh, thing altogether, so we are not concerned about this. You can convert your picture into a black and white picture also if you don't want to remove the background, but you want to convert the picture into a black and white picture. You can also do that by using color, and you can apply like this. So this is now a black and white picture. Okay, so I'm just removing it. This was just for your extra knowledge. Okay, now we have to concentrate here on this. So we want to find out some basic information from our data, which is employee count, attrition rate, active employee, and average age. These are the 5 things that I want to do. I don't want this. This is the chart basically. So again, you go to picture format and you'll get the option of crop. So if you don't want any element of the picture, you can just crop it. Okay. And this part is what we are looking at. So there are 5 factors which you want to find out. And for this, we don't require any pivot table. We will not create a pivot for this. We will just use some formulas to create these. Okay. So I'm just typing in what we require. So one thing that we want is employee count. Okay. I will just increase the, I will just reduce this image size and increase the sheet. Zoom the percentage so you can see the things properly now. Okay. And I will remove all this. Yeah. So what we have is employee count. Then what we want is attrition count. Attrition rate. What is the meaning of attrition word? Can anyone just type in the chat box? What is the meaning of the word attrition? Those who were not there yesterday, they will come to know about it. Okay. And average age. So whatever information I wanted, I have put it in the different columns. Okay. So attrition basically means the number of employees leaving the organization, rate at which the people exist. Very good. Yeah, people who are exiting the organization, it is that rate. Okay. So these are the 5 factors that I want. So this is number 1, this is number 2, this is number 3, 4, and 5. Okay. So how do we get the employee count? Okay, now you will have to help me with the formulas because I am assuming that you know at least this much of Excel. Okay, because many people are using Excel from long. So now you'll have to help me with the formulas, and that will help you in revising of the basic concept of Excel. This is nothing to do with advanced level. This is very basic. Okay, so we are coming to the data now. Now we want to find out what is the total head count. How many employees are there? Total employees. So can you tell me which column we can refer to and how we can get this number? How we can get this number? And it should be dynamic. It should be dynamic. Dynamic means whenever I add more employees, I should get count if. Okay. So why count if only Niti, and why not count function? Why can't we use count? And what condition you will put if you are using count if? Yes, sir. It will be only count, sorry. Yeah, it Count. will be count. Yes. Yes, it won't be count if. Okay, it will be count. Okay, count. So I will use count. That is the right function that to use. Okay, to use. Shrestha is saying count A.
Okay, Shrishta, I'll come to you again. But those who said count, Narkar, okay, you said count. Now I have written count over here and it is asking for the value. So I'm going to the input sheet. Okay, I'm going to the input sheet. And in the input sheet, now tell me which column I should select. Just everyone answer the column number, the column reference that I should select to count the number of employees in the data. I'll be using that column. And I want all the participants to answer this. Just put the column number, column heading. So A, column B, column C, column D. I'm just zooming it so you can see the columns. You can consider any count. Okay. So can I take column A? Can I take any? So those who are saying any, can I take column A? That is what I am asking you now specifically. Can I take column A? So I am selecting A to A. So A to A. Okay. So what I've selected is count input HR data. This is a sheet name and this is column A to A. That means entire column I've selected. Okay. Or we can give it a reference also A2 to A1525, the exact number also. Okay. And we'll say enter. What I'm getting is a 0. What I'm getting is a 0. Yes. Now, why we are getting a 0? Who will answer this question? Why we are getting a 0 here? Yes, Shrishta. बिकॉज काउंट ओनली उन मतलब वो नंबर्स को ही सिर्फ काउंट फंक्शन काउंट करता है. अगर उसमें टेक्स्ट यूज हुआ है तो दे आर नॉट गोइंग टू काउंट. फॉर दैट हमको काउंट ए फंक्शन यूज करना पड़ता है ताकि वो टेक्स्ट को भी काउंट करें हमारे. Very good. Very good. So these are some basic things which people don't know or don't remember or don't they matlab, this is something which is not taken care of. Okay. So now since I am a trainer, my job is to teach. Okay. So whenever I know that the student are missing on something, I get triggered. And now I will teach you count function. Okay. So when you type count into Excel, I'm just zooming in this part and just focus on this. Okay. So whenever you type count in the Excel, how many functions can you see? Can you count it? You have to actually apply the count function now. Okay, so you have to count how many count formulas or functions you can see. So if I help you 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. How many count function can you see? The answer is 8. Okay. How many do you know out of this 8? How many have you used or do you know? ठीक है, 8 तो है. अब आपको कितना आता है इनमें से, कितने आपने काम में लिए हैं? So it can be 1, 2, 3, whatever. Okay, now I want that number in the chat box. Come on, and don't be shy in putting the number because everyone has joined the session because they want to learn. So Shrishta says 5, Narkar says 3, Kalpana says 1, HPPC says 4. Okay. What about others? Please reply in the chat box. आप लोग को कितना आता है? 4. Niti says 4. Krish says 2. Okay. Let me put my account also. People assume that I know all 8, but I know only 6 because that is the most used. Okay. 4. Okay. So average is 3 or 4 functions. Okay. What we should know basically, we should not know everything because Excel has thousands of functions. So it is not required to know all. Basically, you should know the top 5. Okay. So you should know 5 functions. So, and we are going to talk about the 5 functions. Okay. So what all functions you should know is, I will take a screenshot of this and I'm pasting it over here. Okay. So Control Shift and this. Just a minute. So first 5 you should know, correct? So count, count a, count blank, count if, count ifs. Okay, now I will just brief you out because the idea is not to teach count function, but since we are dealing with it, so I will just tell you what does this means. Okay, so count and count a, yeah. So average is 3 to 4 functions. Okay, now so as Shrestha rightly mentioned, that count counts the number of cells that contains number.
So you can apply count function only to those columns or rows which has numbers. Okay. Secondly, count A. So when you come to count A, counts the number of cells in a range that are non-empty. So A doesn't mean alphabet, and N doesn't, and count doesn't mean number. Count means number, cell containing number. A means anything which is not empty, any cell which is not empty. Then third one is count blank. Obviously, what the name suggests, count blank will count all the blank cells. Count blank will count all the empty cells in the range. Count if is used to count any cell within a range which has some specific condition attached to it. Okay. So suppose I have 5 products A, B, C, D, E, and there are different sales. I want to find out how many times product A has been sold. So I can use count if in that particular case. So I have to give the criteria and the range. Okay. Then comes count ifs. So what is the difference between count if and count ifs? Anyone? So count if is used when only there is one condition, and count is used when there is multiple condition. वेरी गुड. तो जब एक से ज्यादा कंडीशन होगी तो काउंट इफ्स लगेगा, इफ्स. ठीक है. इट इज प्लूरल. सो अगर आपको मान लीजिए कि आप ये देखना चाहते हैं कि प्रोडक्ट ए की नॉर्थ रीजन में क्या सेल्स है, तो देयर आर टू क्राइटेरियाज नाउ, देयर आर टू कंडीशंस. वन इज द नॉर्थ रीजन एंड देन प्रोडक्ट ए. तो दोनों को मिला देंगे तब काउंट इफ काम में आएगा. ठीक है. चलिए ये सब हम काम में लेने वाले हैं अभी इसी सेशन में. सो लेट अस यूज दिस प्रैक्टिकली. सो नाउ the answer that everyone was telling, count will not work here. Count will count only in the numbers. So we cannot select A cell, the column A. We will select column B. So here only I am just making the changes, and you see that the answer we get is 1524. तो एम्प्लॉय काउंट यहाँ पे कुछ अलग आ रहा है बिकॉज थोड़ा सा डेटा मैंने मॉडिफाई किया है. तो डोंट जस्ट बी बॉदर अबाउट इट, एंड आई विल नॉट लेट यू बॉदर बिकॉज हम एक काम करते हैं, इसको अभी छुपा देते हैं क्योंकि आप सीए जितने काफी सारे सीए लोग हैं अभी ऑडिट कर देंगे यहाँ पर. आई डोंट वांट यू टू बी एक्टिंग एज ऑडिटर नाउ इन द क्लास. ठीक है. चलिए. हाँ हाँ ये ठीक रहा बिल्कुल. चलिए. So we have got the employee count. 1524 is the number that we are getting. And now let us check this answer. Is it right or not? So how to check? We'll go to the input sheet, and this is the number of this is the number. So control shift and down arrow. Control shift and down arrow. It will basically give you the count. Can you see bottom में count लिखा हुआ है 1524 1524. Can you see this area? Yes, sir. Yeah, I'm just putting a red cursor over here. Can you see 1524? तो 1524 एम्प्लॉइज हैं टोटल. ठीक है. हमने काउंट कर लिया. और अगर हम इसकी जगह काउंट ए लगाते तो क्या ये काम करता? डेफिनेटली. ठीक है. काउंट ए भी काम करता. तो हम वापस जाते हैं अपनी कैलकुलेशन वाली शीट पे और यहाँ जाते हैं कैलकुलेशन पे. ठीक है. अब मुझे क्या बार बार इनपुट वाली शीट पे जाना पड़ेगा. तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट पुटिंग अ हाइपरलिंक ओवर हियर. तो मैं इनपुट शीट लिख देता हूँ, उसका नाम इनपुट, दैट मीन्स डेटा. बार बार इस शीट पे जाना पड़ेगा. तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम क्रिएटिंग हाइपरलिंक. व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ हाइपरलिंक? फास्ट. कंट्रोल के. वेरी गुड. So control K, and you want to place in this document and input and click on OK. Okay. So now we can just click on this sheet, this cell, and it will take me to the input sheet. So now I'm here. और यहाँ पे हम एक कॉलम बनाते हैं. यहाँ पे हम लिख देते हैं कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, और इसी के बाद में लिख देते हैं डैशबोर्ड, डैशबोर्ड, और इसके बाद लिख देते हैं पिवट टेबल. तो अब हम यहाँ से नेविगेट करेंगे. कंट्रोल के, place in this document and place to calculations, dashboard, control K, and place to dashboard. Where is the dashboard? Output, and then pivot table. So control K, and I will created pivot tables. ठीक है. तो बस अब इधर से उधर जाना जो है आसान हो गया है. ठीक है. चलिए. एम्प्लॉय काउंट हमने निकाल दिया था. एक मिनट में इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ, फॉन्ट साइज, so it is properly visible. So now it is properly visible. Okay. Right. ठीक है. And we'll do one more thing. We will just remove the grid lines. Okay. Now this data is there.
we have employee count. Next, what we want is attrition count. Okay, now attrition count का मतलब क्या होगा कि कितने लोग छोड़ के गए ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, हाउ मेनी पीपल हैव लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन. सो लेट अस गो टू द डेटा अगेन. ओके, एंड नाउ विच कॉलम विल टेल मी कि कौन गया कौन नहीं गया. which column is going to tell me कि how many people have left the organization. Tell me which column is going to tell me. Write the column number in the answer. ठीक है, बताइए कौन से कॉलम से पता चल रहा है कि कहाँ तुम चले गए. कॉलम ए, ठीक है, कॉलम ए, कॉलम ए करेक्ट. वैसे कॉलम बी में भी हो रहा है लेकिन कॉलम ए पे टिके रहता है. ठीक है, तो यस का मतलब क्या है, यस, इज इट अ यस, यस, चले गए. वो जो लोग चले गए उनके आगे यस है, जो लोग नहीं गए उनके आगे नो है. यहाँ पे मैंने इसको नंबर में कन्वर्ट कर लिया था इफ फंक्शन लगा के. सो इफ द आंसर इज यस इन दिस पर्टिकुलर कॉलम देन गिव मी अ 1 एल 0. तो ये 1 और 0 है, तो यहाँ पे एट्रिशन नंबर में है, वो यहाँ से भी नंबर आ सकता है और यहाँ से भी आ सकता है. ठीक है, सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू यूज काउंटिव. ठीक है, और आप लोग हेल्प करेंगे मुझे काउंटिफ का फंक्शन लिखने में. सो इज इक्वल टू काउंट इफ. इट इज आस्किंग फॉर टू थिंग्स, वन इज रेंज, वन इज क्राइटेरिया. वन इज रेंज, वन इज क्राइटेरिया. नाउ व्हाट शुड आई सेलेक्ट इन द रेंज, व्हाट शुड आई सेलेक्ट इन द टेबल रेंज. 1. हाँ, टेबल 1. okay, so now we don't have to go to that input sheet again. Okay, we will call that column here. यहीं पे बुलाएंगे हम उसको. ठीक है, कैसे बुलाएंगे, लिख के उसका नाम टेबल 1. टेबल 1 इज द नेम ऑफ दैट टेबल. ओके, और टेबल 1 का कौन सा कॉलम चाहिए मुझे. ठीक है, तो उसके लिए यू विल ओपन अ स्क्वायर ब्रैकेट एंड यू विल सी ऑल द कॉलम हेडिंग्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टेबल. तो हमने उस टेबल को एक तरीके से यहाँ कॉल कर लिया है. एंड विच कॉलम आई वांट, एट्रिशन कॉलम. okay, attrition column. So this is the range, this is the range you can see here in the formula bar. आप formula bar में देखिए, है ना, ताकि आपको सारी जो चीजें हैं एक ही जगह पे दिखाई देंगी. You can see in the formula bar. So countif table 1, attrition employee leaving the organization, this is the range जहां से हमें ढूंढना है. और ढूंढना क्या है, कौन से वाले एम्प्लॉय लाने जो यस बोल चुके हैं, जो जा चुके हैं. तो कैन आई टाइप यस ओवर हियर, इज दिस राइट. They're in Now inverted with commas. quotes. In quotes. Okay, what in quotes, yes should be in inverted comma. Okay, if you don't put inverted comma, see what you'll get. 0. 0. Okay, you'll get a 0. You'll not get an error, but you'll get a 0. But if you put this into quotes, you get 257. That means 257 लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन को टाटा बाय बाय करके जा चुके. ठीक है, so that is the attrition count. So what we got first is the employee count using the count function. Okay, then we use the count if to get the attrition count. Okay, then we have to derive the attrition rate. What is the rate of people, what is the percentage of employees leaving the organization. So what should we do here, क्या करें बताओ, कैसे निकालेंगे Now परसेंटेज. we can put formula like attrition count to divide by employee count and Very 200. good. So we can just simply do this attrition count, which is this E13 divide by C13. Okay. So 0.7 आ रहा है, point में आ रहा है answer. I want to convert into percentage. What should I do now? Alt HP. Alt HP, Alt HP. वो इतना एक तरीका और है इसका करने का, कोई बताएगा क्या. फिर कंट्रोल 1 पे जाके नंबर की जगह इतना लंबा नहीं जाना है, शॉर्टकट का भी शॉर्टकट. देखिए मैंने कुछ किया, कुछ हो गया है अभी, देखिए अभी ये वापस से हो गया है. ठीक है, आई हैव डन समथिंग एंड लेट मी जस्ट हाइड दिस. ये भी परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, एंड कंट्रोल जेड कर लेते हैं इसको, कंट्रोल जेड. let me open one software. It will show you whatever keys I am pressing on the keyboard. ठीक है, तो आपको दिखाई देगा क्लिक परसेंटेज. वो देखिए क्लिक क्लिक वाले लोग भी यहाँ पे बैठे हैं. so whenever I do my sessions in Excel, I avoid using click or the keyboard, the mouse. Okay,
सो जनरली व्हाट पीपल डू इज यहाँ जाके और इधर इस पे क्लिक करेंगे परसेंटेज पे, वो नहीं करना है, ठीक है। सो नाउ यू विल बी एबल टू सी ऑन द राइट हैंड साइड कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन द कमांड्स विच आई एम पुटिंग। ओके, सो जो भी मैं अभी प्रेस करूंगा बटन, आपको राइट हैंड साइड कॉर्नर पे इधर जहाँ पे मेरा माउस है अभी, वहां नजर रखनी है अपनी, ठीक है। और नजर हटी और दुर्घटना घटी हो जाएगा अगर आपने नजर हटाई है यहाँ से तो, ठीक है। सो कीप योर आईज हियर in this percentage and you will see something over here, and this is what I've done. Control Shift 5. See, you see that on the number 5 there is a percentage symbol, on the number 4 there is a dollar symbol, on the number 3 there is a hash symbol, on the number 2 there is a @ symbol. So when you press Control Shift and 5, it will convert the number into percentage. If you press Control Shift and 4, it will put a dollar sign. If you put number 3, it will convert into a date. If you put Control Shift and 2, it will convert this into a time. And if you press Control Shift and 1, it will bring it back to the number format. ठीक है, चलिए, ये एक्स्ट्रा ज्ञान था जिसकी जरूरत नहीं थी, बट क्योंकि मेरी आदत हो गई है अब एक्स्ट्रा ज्ञान बांटने की, तो इसके लिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव गॉट द एट्रिशन रेट। आई विल जस्ट राइट डाउन द शॉर्टकट की ओवर हियर। सो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस विच नंबर 5, इससे होगा क्या, इससे होगा ये परसेंटेज आ गया, ठीक है। चलिए, ignore the extra text that you see on the screen. Okay, now we want to find out the active employees. How do we get the active employees? Tell me, active employee कैसे मिलेगा? सर एम्प्लॉय काउंट से अट्रिशन काउंट लेस कर देंगे। हाँ, तो C13 minus E13 and what we get is 1267. It is the active employees. Okay, तो अगर इसका परसेंटेज पूछे कि एक्टिव एम्प्लॉय कितना परसेंटेज रह गया है, तो 83 आ जाएगा, 100 माइनस 70, ठीक है। या आप 1267 divided by 1524 करेंगे तो भी मिल जाएगा। Now we want to find out the average age of all the employees. Okay, so how do we calculate the average? Which function we need to use? Average we need to find out. चैट बॉक्स में आंसर की बाहर आ जानी चाहिए थी, आ गई है। नीति एंड श्रेष्ठा द राइट वन। एवरेज AVG, करेक्ट। सो इज इक्वल्स टू AVG। AVG नहीं है, एवरेज ही है, पूरा पूरा एवरेज है, ठीक है। बट आप AV लिख के और टैब जब प्रेस करेंगे नीचे आके, so it will give you the average function. Now again you have to put the numbers. Now what we have to do, we have to take the average of the age. So which column we should have to take? We should have to take which column in the input table? This is a common sense question now. Okay, which column? Achha, let me show you the table. Yeah, age column. Obviously we have to take the average of age, so we have to select the age column. Now without looking at the data, I'm assuming that there is a age column. Not assuming, there is actually a age column, so I'm just checking out. So table और यहाँ पे लिखते हैं age, तो age का कॉलम मिल गया, ठीक है। क्लोज कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, और ये आंसर देखिए 36.77। कभी भी एज पॉइंट में हो सकती है क्या? कैन द एज बी इन पॉइंट्स? नो। सो हाउ डू आई रिमूव द डेसिमल? अभी बोलेंगे क्लिक 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 क्लिक। ओके, सो क्लिक क्लिक करके भी कर सकते हैं। अदरवाइज इफ यू आर sophisticated and you want to show off, you can use round. Okay, you can use the round function also, and you can put this in the round and comma number of digits, तो इसको कर देते हैं हम 2 digits, ठीक है, या 0 कर देते हैं यहाँ पर, और तो यहाँ पे 37.00 आ गया, वो नहीं करना था हमें, ठीक है। इसको ऐसे ही करते हैं, तो 3 नहीं आएगा, 1 कर देते हैं, तो 1 में भी नहीं आ रहा। इट इज राउंड अप करना पड़ेगा, है ना, वी हैव टू पुट यूज राउंड अप। Okay, number of digits 0. Now we are getting 37, but you will have to remove the decimals. Okay, now what is the shortcut key to remove this? So Alt H, okay, and then 9, Alt H and 9, and then F4 again to repeat the same thing. Alt H and 9, you can press this
has gone. Okay, so this is how we have derived the first part of the dashboard, which was based on calculations. So we had used 5 functions. One is count, then count if, then this simple divide, this is minus, and this is average function. Okay, so let me show you the output. Let me go to the input, and input some dashboard pe aa jate hain. So this part we have done. Okay, so what we have done is, let me go to the draw and let me draw something. So we have done this. ये सब जो है, ये जो मैंने पीला पीला किया है अभी, ये हमारा हो गया है, ये वाला पार्ट है ना. यहाँ पे नंबर अलग आ रहे हैं because the data is different. I told you. ठीक है, so this is done. Now we will have to create these charts. Okay, so I will start with this first one. Will not do this today. ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस्ड है, इसको हम अभी अवॉइड करेंगे. अभी हम इस पे आते हैं, डिपार्टमेंट वाइज एट्रिशन. पिवट टेबल हम सबकी बना लेंगे. ओके, सो पिवट टेबल बनाना शुरू करते हैं, और पिवट के लिए यहाँ आएंगे. ठीक है, so what I'm doing is I'm just writing the headings which we wanted. So what all pivot we want, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं pivot number और pivot heading. I hope everyone is okay with the speed of the deliberation, the session. Okay, if it is fine, you can write down fine in the chat box. If the speed you are finding it fine, if you want me to increase, you can write down fast. If you want me to slow down, you can write down slow. Okay, so give me your feedback with regard to the speed. If it is fine, write down fine. Otherwise, you can write down I or D, I or S. So increase or decrease or whatever. Okay, so fine, very good. I am also fine with this speed. Now, what is the first pivot that we have to create? So we have to find out gender wise attrition. Second, what we have to do, let me bring this over here. So control C करते हैं इसको, और कंट्रोल V कर देते हैं. तो ये यहाँ ही आ गया. अब इजी होगी, आसानी होगी हमारे को कॉपी पेस्ट करने में. तो यहाँ पर आ गए हैं एट्रिशन बाय जेंडर. जेंडर वाइज एट्रिशन मैंने लिख दिया है. उसके बाद है डिपार्टमेंट वाइज एट्रिशन. So this homework is necessary so as to increase the understanding. इसलिए मैं copy paste कर रहा हूँ. मैं shortcut भी ले सकता था, but I don't believe in taking shortcuts. Okay, so yeah, gender wise attrition, department wise attrition. Then we want number of employees by age group. Then we want job satisfaction ratings. These are the different pivots we have to create. Okay, ratings. Okay, then what else we want? There are 2 more. One is education field wise attrition and attrition made by gender. Okay, so education field wise attrition and attrition rate by gender for different age groups. यार राजू उमेश को अच्छी तरह जानता तो मेरे साथ भी कुछ धोखा नहीं खा सकता कि भाई ये नहीं चाहूंगी. Okay, so this is it. Okay, so now we have to create all these 6 pivot tables now. Okay, let us see how many we can do now today. Okay, and rest we will continue tomorrow. Okay, so let us start with the first one. The first one is gender wise attrition. Okay, so 6 pivots we have to create, and pivot table including pivot charts. So pivot heading, or we can say pivot title for table as well as chart. So gender wise attrition. Okay, department as attrition, number of employees by age group, job satisfaction rating, education wise, field wise attrition, and attrition rate by gender for different. So every column except these 2 columns has attrition.
So there are 4 columns, which is attrition. That means the management is focused in finding out the details about the employees who have left the organization rather than those who are there. Okay, चलिए, तो पहला है डिपार्टमेंट वाइज एट्रिशन। तो हम यहाँ से ही इसी शीट में पिवट्स बनाएंगे सारे। तो पहला पिवट टेबल बनाने के लिए where do you get the option to create a pivot table? Which tab has the option to insert a pivot table? Okay, so I've given the answer in the question itself. Okay, so Shrestha has got this right. Gurjot is also right. Balkishan is also right. Insert, correct. So insert tab, you have to go to the insert tab. In the insert tab, the first option on the left hand side, what you see is a pivot table. The third option is the table, normal table, and the second one between them is the recommended pivot table. Okay, and so we will click on pivot table. So you can click over here. If you don't want to click and you want to use a shortcut, then what will be the shortcut? Alt H, no, not home tab. Now we have to go to the insert tab. So to enter the insert tab, see, Alt is the basic shortcut key for anything. Yeah, Alt and VT, very good. So Alt and VT. So those who are answering, they are my student of my batch, and because since they have attended all my shortcut keys class, they are now master in answering so fast. Okay, thank you all. And those who have not, they can watch my video on shortcut keys which I put on my channel. Okay, so you can also learn the shortcut keys. There are 100 shortcut keys which I have shared in that particular video. Okay, so now it is asking for pivot table from table or range. Okay, so we have to give the table or range. So can we just type in table 1 over here? Can we type table over here? Can we type table over here? Table 1. Can I say table 1 and it will take the table 1 as a range or not? क्या हम कर सकते हैं ऐसा? Anyone saying something? कोई कुछ बोलना चाहता है, कहना चाहता है, बताना चाहता है? So I'm just typing table 1 here and definitely it will select the entire table. Okay, because this is named as a table. Now, how do you name a table? You have to just select the data and you can press which button. What is the shortcut key to create a table? Control T. Very good, Control T. What is the another shortcut key to create a table? Control L. Control L, only L, Control L. कंट्रोल शिफ्ट एल से तो क्या लग जाएंगे? फिल्टर लग जाएंगे। फिल्टर का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट और एल। कंट्रोल टी से टेबल बनता है, कंट्रोल एल से भी टेबल बनता है। ठीक है, so there are two shortcut keys to create a table. Once you have created the table, then you can select the location of the pivot table. So we want to put it in the existing sheet of pivot tables. तो existing sheet में कहाँ? यहाँ D11 पे। तो यहाँ मैंने सेल सेलेक्ट करा D11 और ये तो यहाँ गलती होगी, यहाँ पे टेबल 1 ही आना था। So table 1. Okay, and I'll say okay. Now when I have pressed OK, once I have pressed OK, now you will see something on the screen. Let me just show you. Let me hide. Acha, I want to hide this image. What is the shortcut key to hide this image? I don't want to delete it. I just want to hide it. बताइए. Answer करो. Have you answered? Control 6, Shrestha, correct, Control 6. So when you press Control 6, you hide all the options. Okay, now when I have inserted the pivot table, this is a layout which I'm seeing. When you click on this layout, you will get a pivot table field. तो इसके दो पार्ट हम कह सकते हैं कि pivot table के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जहाँ पे रिपोर्ट बनेगी, जो एक्सेल शीट के अंदर चले जाता है, और एक बाहर हवा में ऐसा मस्त पवन की जैसे इधर से उधर घूमता रहता है। ठीक है, यू कैन फिक्स इट ओवर हियर ऑल्सो। इधर उधर मत नाचो, एक जगह पे जाके कोने में बच जाओ। इधर भी, इधर इस कोने में रख सकते हैं या उस कोने में, जो आपको कोना पसंद हो उधर जाके इसको फिक्स कर दीजिए। ओके, जस्ट फिक्स इट ओवर देयर। सो आई फिक्स इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, बिकॉज बीइंग अ लेफ्ट हैंड होल्डर, देखिए लेफ्ट
लेफ्टी, तो मैंने इसको लेफ्ट में रख दिया है। चलिए अब ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी ऑफ यू आर लर्निंग पिवट फॉर द फर्स्ट टाइम। किसका पहली बार है, पहली दफा किसके है ऐसा जो पहली बार पिवट सीख रहा है? जस्ट मेंशन इन द चैट बॉक्स इट इज द फर्स्ट टाइम, सो यू कैन राइट डाउन फर्स्ट इन द चैट बॉक्स, FIRST, फास्ट। किसी का भी नहीं आया मतलब सबने कुछ ना कभी पिवट बनाया है। फर्स्ट, कल्पना से फर्स्ट, ओके, सो देयर एटलीस्ट वन पर्सन इन द क्लास जो पहली बार ये देख रहे हैं, वेरी गुड। चलिए अच्छा है। चलिए हम जिन लोग को आता है अभी उनके नंबर आएगा, ठीक है। आपको कितना आता है अभी हम चेक करेंगे, जिन्होंने नहीं लिखा है फर्स्ट अभी उनसे उनकी बारी है आंसर करने की, ठीक है। सो हाउ मेनी सेक्शंस डू यू सी इन द पिवट टेबल, ठीक है, आंसर करो चैट बॉक्स में। आपको कितने सेक्शंस दिखाई दे रहे हैं पिवट टेबल फील्ड वाले में, जो हमने ये लेफ्ट में रखा है, कितने सेक्शंस दिखाई दे रहे हैं? हाउ मेनी सेक्शंस कैन यू सी देयर? 4, 4, वेरी गुड, ओके। क्यों ये नहीं दिखाई दे रहा? ये इसने क्या किया है, ये सेक्शन नहीं होता है, ये क्या, इसको क्या बोलेंगे फिर? व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? ये जो फील्ड्स दिखाई दे रही हैं, ये जो सर्च आ रहा है, ये हेडिंग्स है। अच्छा इनको हेडिंग्स कहते हैं, ओके। ओ वाओ, दिस नॉट अ सेक्शन, ओके, दीज आर सेक्शंस, okay. So basically in the pivot table there are 4 sections and one section which has the headings of the table। जितना भी टेबल के अंदर माल मसाला था वो सब इधर आ गया है, ठीक है। यू कैन सर्च इट ऑल्सो, तो अगर आप एज लिखेंगे तो देखो एज से रिलेटेड चीजें आ गई, ठीक है। सो दिस इज सर्च मेन्यू, दिस इज द 4 sections, okay। Now let me explain you what is the use of these 4 sections। जो भी ये 4 सेक्शन दिखाई दे रहे हैं इनका काम क्या है, what is the use of these 4 sections, let me just show you that, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट, ओके। नाउ सी दैट पहला सेक्शन जो है हमारा पिवट टेबल का वो है फिल्टर, दूसरा है कॉलम, तीसरा है रो और चौथा है वैल्यू, ठीक है। सो इसको शॉर्टकट में इसको प्यार से हम बोलते हैं FCRV। FCRV, वेरी गुड। तो जो जो पढ़े हैं उन सबको याद है FCRV, FCRV, फिल्टर, कॉलम, रो और वैल्यूज, ठीक है। अब मेनी पीपल गेट कंफ्यूज बिटवीन रो एंड कॉलम, तो उसका भी मैंने एक शॉर्टकट बनाया था, एक एक्रोनिम। हाँ क्या है गुरजोत? HRCV। वेरी गुड, HRCV। नाउ एवरीवन कैन कनेक्ट टू इट कि हमारी CV किसके हाथों में होनी चाहिए? HR के हाथों में होनी चाहिए। और हमारे हाथों में क्या होनी चाहिए? जॉब। HR जो हमारे को कवरिंग वो लेटर दे दे कि भैया ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में है, तो HR को मिलेगी CV, तो CV से मिलेगा हमें जॉब, ठीक है। तो यार आपको ऐसे याद रखना है। नाउ व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट रोज, तो HR में H का मतलब है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रोज, और कॉलम का मतलब है, कॉलम्स आर कैसे होते हैं? वर्टिकल। तो ये आपको क्यों याद दिला रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको पता पड़ जाएगा जब आप कंफ्यूज होते हैं कि रोज कैसी हैं, तो रोज आर ऑलवेज नंबर्ड, तो ये जो 4 है, ये 5 है, ये रो नंबर है। और कॉलम जो है CDEF, दीज आर कॉलम्स, कॉलम्स आर ऑलवेज वर्टिकल, वर्टिकल ऐसा, और रो ऐसी, ठीक है। तो अब कभी 6 लगा है मैच में तो वो वर्टिकल है, और कभी 4 हुआ है तो इट इज अ हॉरिजॉन्टल। चलिए नाउ कमिंग बैक टू द फील्ड्स, तो हम इस पे क्लिक करते हैं। ये चारों खाने, ये चारों जो सेक्शंस है आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सोफिस्टिकेटेड वे में these are called as sections। Once I was taking a training in a very remote region of Rajasthan, चित्तौड़, और वहां पे मैंने एक स्टूडेंट से पूछा, कॉलेज के इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स थे लेकिन हाँ क्योंकि राजस्थानी है, तो उनसे मैंने पूछा कि ये जो 4 दिखाई दे रहे हैं आपको सेक्शंस, इसको क्या बोलेंगे हम हिंदी में? इसको क्या बोलोगे, ये क्या दिख रहे हैं आपको? मैंने सेक्शंस भी यूज नहीं किया था, आई जस्ट आस्क्ड देम कि क्या दिख रहे हैं, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड एंड अमेज्ड टू हियर दैट वर्ड जो उन्होंने मुझे बोला। और उसके बाद मुझे बहुत हंसी आई वो सुन के, ठीक है। एंड आई ऑलवेज शेयर दिस इंसिडेंट विद एवरीवन। तो उन्होंने बोला कि सर दीज आर खांचे, ये 4 खांचे हैं, ठीक है, खांचे हैं। तो मैंने कहा वेरी गुड, तो खांचे मीन्स सेक्शंस बेसिकली, ठीक है। कि आप कारपेंटर की जब लैंग्वेज सुनेंगे तो वो खांचे बताता है, ठीक है। दीज आर ऑल सेक्शंस, ठीक है। चलिए फिल्टर, कॉलम, रो एंड वैल्यूज, तो देखो वैल्यू से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो है वैल्यू। या तो हमारे को कोई वैल्यू दे, हम किसी को वैल्यू दे,
और जो भी टाइम हम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे हैं वो भी वैल्यूएबल होना चाहिए. लाइक यू आर स्पेंडिंग योर टाइम, सो आई शुड बी एबल टू डिराइव, गिव यू सम वैल्यू, यू शुड बी एबल टू डिराइव सम वैल्यू. ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर साथ में हैं. चलिए, तो वैल्यू. अब वैल्यू के आगे एक आइकन लगा हुआ है, एक सिंबल है, उसको क्या बोलते हैं? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, if you can see that symbol in the near the value box, value button, what is this called? What is this called? Tell me. The sigma, sum का sign. Summation or sigma. Sigma, this is called as summation or sigma. So that means that whatever you put in the value section, जब भी आप कुछ value section में रखेंगे, तो ये क्या करेगा? आपको समरी देगा, समेशन देगा, टोटल दे देगा उसका. ठीक है, आज हमने क्विज किया था एक्सेल वाइब्स में, और गुरजोत ने वो क्विज डाला था. गुरजोत, क्या था वो क्विज? लेट मी शेयर दिस विथ ऑल एवरीवन. ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन पे अभी Sir, आपको एक्सेल वाइब्स के ग्रुप में ले जाता हूँ. and एंड देयर वाज अ कंफ्यूजन इन द ग्रुप विद रिगार्ड टू द आंसर्स. आई वाज जस्ट चेकिंग इट. अभी भी गलत आंसर आ रहे हैं, गलत आंसर पे आंसर दिए जा रहे हैं, लेकिन सही आंसर पता नहीं चल पा रहा है. तो चलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अभी इससे रिलेटेड है. So the question is, I hope you can see the question on the screen now. yes, sir. Question was, which function does a pivot table primary serve? मतलब pivot table का काम क्या है? तो डेटा वैलिडेशन है, डेटा विजुअलाइजेशन है, डेटा सॉर्टिंग है, या डेटा समराइजेशन है? सो आप लोग के पास अभी ये केबीसी चालू किया है हमने. अब आप लोग आंसर करेंगे चैट बॉक्स में. जल्दी से एबीसीडी में से बताइए कि क्या सही आंसर है. आपको क्या लगता है पिवट टेबल क्या काम करता है? क्वेश्चन ये था कि पिवट टेबल का यूज क्या, व्हाट इज यूज, यूटिलिटी ऑफ पिवट टेबल. इज इट यूज टू वैलिडेट द डेटा, इट इज यूज टू सॉर्ट द डेटा, इट इज यूज टू क्रिएट विजुअल्स इन अ डेटा, और इज इट यूज फॉर डेटा समराइजेशन? तो अभी देखते हैं. आंसर आया है डी डी Yes. डी डी डी. वेरी गुड. So D is the right answer. Okay, this is the right answer. D, data summarization. Because when you create a pivot, पिवट जो वर्ड है, इसका वर्ड भी, इसका मतलब भी यही है, समराइजेशन, टू क्रिएट अ समरी, टू 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 ब्रिंग टुगेदर थिंग्स टुगेदर. तो ना ये वैलिडेशन के काम में आता है, ना सॉर्ट करते हैं डेटा को. सॉर्टिंग इज जस्ट अरेंजिंग द डेटा इनटू अ पर्टिकुलर ऑर्डर. So we are not arranging the data, we are deriving some summary from the data. And visualization is not by pivot table, it is by pivot chart. तो ये सारे आंसर गलत थे, ओनली एक ही सही आंसर था, डी. So if you have participated in the quiz, you would get it right. Okay. And let me tell you, those who are participating on a regular basis and answering all the quiz, they will be rewarded with the certificate once we complete 15 questions. ठीक है, ये हम डालेंगे ग्रुप में कि जो भी पहले मतलब 15 क्वेश्चन में जो कंसिस्टेंट विनर होगा हर एक क्विज का, उसको सर्टिफिकेट मिलेगा. पहले टॉप 3% विल गेट दैट सर्टिफिकेशन. ओके, सर्टिफिकेट ऑफ appreciation for participating in the quiz. चलिए, सो नाउ, सो ऐसे महीने में 2 बार होगा, 15 क्वेश्चंस एंड 15 क्वेश्चंस. सो इफ यू आर नॉट पार्टिसिपेटेड टिल नाउ, सो जस्ट बी श्योर, मेक श्योर दैट यू आर लाइव ऑन द ग्रुप एट 7 PM एवरी डे. ठीक है, तो 7 बजे आप एक बार ग्रुप में पहुंच जाइए और फटाफट से आंसर चेप दीजिए. ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना काम. पहला अब हमें बनाना है जेंडर वाइज एट्रीशन. तो मैं इसको तो बनाऊंगा ही, लेकिन साथ में आपको थोड़ा सा ब्रीफ भी देता जाऊंगा. तो पहले हमें क्या चाहिए? एट्रीशन चाहिए, जेंडर वाइज एट्रीशन. एट्रीशन कहाँ से आएगा? एट्रीशन नंबर वाले से या एट्रीशन से? विच कॉलम आई हैव टू सेलेक्ट टू गेट दिस फ्रॉम द फील्ड? इन फील्ड में मैंने एट्रीशन लिखा, 3 आ गया. एट्रीशन एम्प्लॉय लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, एट्रीशन नंबर, एट्रीशन लेबल. विच वन शुड आई सेलेक्ट? टेल मी. Sir, attrition living organization. अच्छा, एट्रीशन लिविंग ऑर्गेनाइजेशन. और इसको कहाँ रखें हम? रो में, कॉलम में, वैल्यू में, फिल्टर में, कहाँ रखें? अभी वैल्यू की बात चल रही थी, हम इसको वैल्यू में रखते हैं. ठीक है, ए और बी, कल्पना सिंह. ओके, सो आई एम पुटिंग दिस. अब किसको क्या करना है? उठाना है और यहाँ पे छोड़ के आना है. ओ, एंड यू हैव गॉट द राइट आंसर. आपने क्या किया है? सही जवाब आप पहुंच चुके हैं. 1524 जो था वो क्या था? अरे ये तो काउंट ऑफ एट्रिशन नहीं, काउंट ऑफ एम्प्लॉइज आ गया.
तो एट्रिशन जब हमने रखा तो यहाँ पे इसने सारे काउंट करके दे दिए। एट्रिशन में we have got the entire number, so this is not the right answer. एट्रिशन इन नंबर रखेंगे तो आ रहा है 257। नाउ व्हाई इज इट सो? अगर मैं एट्रिशन लेबल रखता हूं तो ये देखिए, ये इसको वैल्यू में रखते हैं तो 1524 आ रहा है। ठीक है, तो क्या था, क्या रखना था हमें? एट्रिशन इन नंबर। नाउ व्हाई नंबर? तो इफ आई शो यू दैट कॉलम एट्रिशन इन नंबर, तो उस कॉलम में क्या था, 0 और 1 थे। there were 0 and 1 in that particular column. There were zeros and 1 in that particular column. इसमें 0 और 1 था। इसमें क्या था? 0 और 1। देखिए, दिखाते हैं आपको। इनपुट वाली शीट पे ले चलते हैं। तो इधर चले, इनपुट वाली शीट पे। देखिए, यहाँ पे है एट्रिशन में यस नो यस नो यस नो, वो सारी काउंट कर रहा है। यहाँ एट्रिशन नंबर है तो उसने 1111 को काउंट करा और ऐड कर दिया। तो ये जितने भी 1 ऐड होंगे, अगर इफ आई जस्ट सेलेक्ट दिस एंटायर थिंग, और आप देखेंगे नीचे आपको दिखेगा न्यूमेरिकल काउंट के बाद सम 257 आ रहा है। तो यहाँ पे भी इसने क्या करा, 257 निकाल दिया। ठीक है, बट ये नंबर हमें तो पता ही था। हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए जेंडर वाइज एट्रिशन। तो जेंडर मतलब कितने मेल और कितनी फीमेल, इसका बाइफर्केशन चाहिए। कौन चाहिए? बाइफर्केशन। तो क्या करेंगे? व्हाट शुड आई सेलेक्ट नाउ? जेंडर। ओके, नाउ वेयर शुड आई पुट द जेंडर? टेल मी, इन द रो और कॉलम? So, हाँ जी, so maybe filter. मे बी फिल्टर, मे बी। वाई फिल्टर? फिल्टर की बात ही नहीं करी ना हमने। हमने पहले वैल्यू की बात करी, फिर मैंने पूछा, मैंने आपको ऑप्शन ही दो दिए हैं। 50-50 खेल रहे हैं हम, रो या कॉलम। फिल्टर तो मैंने चूज ही नहीं किया है। बताइए, रो या कॉलम में से कहाँ रुकूं? एनीवन? वेयर शुड आई पुट दिस जेंडर, इन द रो और इन द कॉलम? यू कैन ऑल्सो से एनीवेयर। Are you answering the chat box? I'm not checking the chat box. Let me check it. Yeah, I've got some answers. Row, 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 row. Everyone is saying row. So let me put this gender into rows. जेंडर को उठाया और रो में ले गए। जैसे ही आप जेंडर को रो में लेके जाएंगे, अब देखिए आपको पिवट टेबल में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है। कैन यू सी द डिफरेंस इन द पिवट टेबल नाउ? पहले हमें 257 दिखाई दे रहा था, अब हमें कौन कौन दिखाई दे रहा है बताइए? अब आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? कैन यू सी द मेल एंड द फीमेल? Yes, sir. Yes, sir. Why so? Because we have put gender into Those. rows. Row. अगर मैं इसको कॉलम में रखता तो क्या होता? सोचिए और बताइए जरा। इसको उठा के अगर कॉलम में रखते हैं तो क्या होता? अभी रो और कॉलम समझाए थे ना आपको, तो ऐसे ही थोड़े समझाए थे, इसलिए समझाए थे ना कि आप उसको अप्लाई कर सके। वट एवर यू आर लर्निंग और लिसनिंग टू, यू शुड बी एबल टू अप्लाई दैट। तो मैंने रो में रखा जेंडर, तो इसलिए पहले फीमेल आया फिर मेल आया। अच्छा, मेल क्या नंबर ज्यादा है, फीमेल कम गई है, लेकिन फीमेल पहले क्यों है? हर जगह ये लोग आगे क्यों रहते हैं हमसे? यस, बिकॉज अल्फाबेट में क्या है, पहले एफ रखा है उसके बाद एम रखा है। अगर पहले मेल आता फिर फीमेल आता तो मेल ऊपर होते हैं। बट यू कैन चेंज इसको। सॉर्टिंग इस काम में आ सकती है। यहाँ पे सॉर्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है मेल को ऊपर लाने में, मेल को पहले लाने में। तो हमने सॉर्ट कर दिया, तो अब पहले मेल दिखाई दे रहा है फिर फीमेल दिखाई दे रहा है। बट द क्वेश्चन इज टू कॉलम्स। यस, इफ यू पुट द रोज इनटू कॉलम्स, मतलब जेंडर को उठा के अगर कॉलम में रख देंगे तो फिर ये अगल बगल दिखाई देंगे। तो ये दो कॉलम में दिखाई देगा, मेल एंड फीमेल। कैन यू सी दैट? हमारा पिवट कैसे ही चेंज हो गया, देखा आपने एकदम से? Yes. आर यू गेटिंग इट? Yes, तो sir. फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें रो में रखना है या कॉलम में रखना है। ठीक है, तो जिस भी तरीके से आप डेटा देखना चाहते हैं या प्रेजेंट करना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड। द आंसर विल रिमेन सेम, आपको चीजें एक जैसी ही दिखाई देंगी, लेकिन रो में देखनी है या कॉलम में देखनी है वो आप डिसाइड करेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट पिवट टेबल दैट वी हैव क्रिएटेड, दैट इज व्हाट?
द नेम ऑफ द पिवट टेबल इज जेंडर वाइज एट्रिशन। आप इसका नाम यहाँ रख सकते हैं, ठीक है, हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, पिवट टेबल के बाहर ही रख देते हैं इसको, यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट पिवट टेबल दैट वी हैव क्रिएटेड, जेंडर वाइज एट्रिशन। और इसको थोड़ा सा अगर आपको सजाना है तो इसको आप मर्ज एंड सेंटर कर दें, यू कैन इंक्रीज द फॉन्ट साइज एंड यू कैन गिव इट अ बैकग्राउंड शेडिंग कलर, ठीक है, थोड़ा सा ये सब, आई लाइक इट, ओके। चलिए, तो हमने ये कर दिया है, ये शेडिंग दे दी है, मेल एंड फीमेल दिख रहा है। अब यहाँ पर आप जो है सम ऑफ एट्रिशन नहीं देखना हमारे को, तो सम हटा दें, बस एट्रिशन दिखा दें, एट्रिशन इन नंबर। इन नंबर की भी क्या जरूरत है, बस एट्रिशन कर सकते हैं, एट्रिशन काउंट यू कैन से, एट्रिशन काउंट। Now I'm trying to change but it is not changing. Why? मैं कुछ भी लिखता हूँ ये हेडिंग चेंज ही नहीं होती, क्योंकि ये पिवट टेबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पिवट टेबल के आप अंदर छेड़छाड़ी ही नहीं कर सकते हो। अगर मैं जेंडर लिखना चाहूँ तो यहाँ तो जेंडर ले लिया इसने, ठीक है, लेकिन इसको मर्ज करना चाहेंगे तो मर्ज हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। इसको मैं कुछ चेंज करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर चेंज ही नहीं हो रहे भाई साहब। सो पिवट टेबल में देयर आर सम लिमिटेशंस, यू कैन नॉट चेंज इट, तो उसको कैसे ठीक करना वो भी हम बताएंगे। बट अब मुझे इसके बाद इसी का चार्ट बनाना है, आई वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू अ चार्ट। सो हाउ कैन आई क्रिएट अ चार्ट ऑफ दिस, बताइए क्या करें, कैसे बनेगा चार्ट, हाउ डू वी क्रिएट अ चार्ट, एनीवन who would answer this question, how to create a chart, नॉर्मल बार चार्ट बनाना है, बताइए कैसे बनाएं, मेल फीमेल, आई वांट टू शो यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल बार चार्ट, हाउ डू आई क्रिएट अ चार्ट। चैट बॉक्स में आंसर का इंतजार हो रहा है, जल्दी से आंसर दें चैट बॉक्स में सब लोग। which which tab will have the option to create chart, Insert. insert, करेक्ट। तो जहां से पिवट टेबल लाए थे उसी के पास में से चार्ट भी आ जाएगा, ठीक है। बट अब ये सारे ऑप्शन डिसेबल आ रहे हैं, डिसेबल्ड है चार्ट्स वाले ऑप्शन। टीडी मैप दिखाई दे रहा है, बस मैप तो बनाना नहीं हमें, लोकेशन तो है नहीं हमारे पास, ठीक है। अभी जैसे हम पिवट टेबल के बाहर गए ये सारे ऑप्शन जो है एक्टिवेट हो गए, लेकिन पिवट चार्ट एक ही रहा, पिवट चार्ट, ठीक है, पिवट चार्ट एंड टेबल। तो बोल रहा है रेंज कहाँ है टेबल की, तो हमारे ऑलरेडी पिवट टेबल बनी हुई तो है। अब इसको इस रेंज पे आ जाएंगे, अभी भी चार्ट देखिए एक्टिवेट नहीं हुए हैं, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब एक काम करते हैं, मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ एंड आई विल प्रेस सम की एंड सी व्हाट हैपेंस। Okay, let me just copy this over here. Okay, I had pressed Control 6 ना, इसलिए इशू आ रहा था आई गेस। अभी दिखेगा आपको, एक मिनट सॉरी। सो आई हैव सेलेक्टेड दिस एंड आई एम प्रेसिंग वन की। अभी देखो कुछ आया आपको नजर में, कुछ आया बार है, चार्ट. क्या आ गया, चार्ट। चार्ट आ गया, कैसे आया ये, क्या मैं इंसर्ट में जाके लेके आया इसको, Alt F1. ऑल्ट F1. ऑल्ट F1, आर यू टेलिंग और यू आर आस्किंग, बोथ। सो शी हैज गॉट इट राइट, इनकी नजर और निर्मा सुपर। देखिए Alt F1 is the right key, ठीक है, it is the shortcut key to insert a chart, but how to use this, एक मिनट मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इस चार्ट को फिर से एक बार करके बताएंगे। अब एक बार पुनः दोहरा जाएगा ये,
तो आप इधर ही जाइए पिवट टेबल के अंदर, इसमें से ये सिलेक्ट कर लीजिए और Alt F1 प्रेस करना है। इस बार देखिए कलर के साथ आए, रंगीन होके आए हमारा चार्ट, ठीक है। सो वी हैव गॉट अ कलरफुल चार्ट एंड दिस इज हाउ वी हैव इंसर्टेड अ पिवट चार्ट, ओके। सो नाउ हाउ टू इम्प्रोवाइज ऑन दिस चार्ट, ठीक है। इसको ठीक ठाक कैसे चार्ट बना दे, थोड़ा सा अच्छा कैसे बनाए, आज हम इससे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम पहला ही देखेंगे बस, ठीक है। बिकॉज आई वांट टू गो स्लो एंड आई वांट यू टू अंडरस्टैंड थिंग्स, क्योंकि आपको हो सकता है ये सब चीजें आती हो, लेकिन आज हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें सीखेंगे, ठीक है। एंड यू विल सी कि हाँ यार ये हमने कभी नहीं किया। तो पहले आपने आज से पहले कभी Alt F1 से चार्ट बनाया है, और दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू। अगर न्यू है तो लिख लीजिए न्यू इन द चैट बॉक्स, new, correct. So I always try doing some element of which might have not people might have not done before, ठीक है। तो ये नया था आपके लिए Alt F1, ठीक है। उससे चार्ट बन जाता है, बहुत इजी है। आपको ना इंसर्ट में जाने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत, डेटा को सिलेक्ट करो, Alt F1 दबाओ, तुरंत से चार्ट आ जाएगा और लोग ढूंढते रह जाएंगे कि कहाँ से आया, ठीक है। अब इस चार्ट को ब्यूटीफाई कैसे करें, तो पहले तो ये जो ग्रिड लाइंस है पीछे की, ये मुझे नहीं चाहिए, तो इसको मैंने सिलेक्ट करा, किसी भी एक ग्रिड लाइन पे आप सिलेक्ट करें एंड प्रेस द डिलीट की। तो ये सफाई हो गई पहले चार्ट की, ठीक है। अब दूसरा ये है कि ये जो, अगर मैं टेबल नहीं दिखाऊं तो आपको पता नहीं पड़ेगा कि इस पे क्या नंबर है, इस पे क्या नंबर है। तो वी वांट टू ऐड डेटा लेबल्स टू द चार्ट। प्लस ये जो है ये बहुत छोटे छोटे छोटू छोटू आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी बढ़ाना है, तो फिर कैसे करें, तो पहले डेटा लेबल ऐड करते हैं। तो आप चार्ट के बार को, किसी भी एक बार को सिलेक्ट कर लें, बड़ा you go to this plus option and you will get this data label option. So click on data label, ठीक है। आपको इस पे डेटा लेबल दिख जाएंगे, लेकिन इतना छोटू दिखाई दे रहा है कि कुछ पता नहीं चल रहा कि है क्या लिखा हुआ, ठीक है। तो what you can do is you can go to data label और यहाँ से आप दूसरे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। I like this data call out, ठीक है। तो डेटा कॉल आउट में क्या होता है, आपको बाहर दिखाई देता है, ठीक है। बट अभी भी हमें देखिए इतना जूम करने के बाद मुझे दिखाई दे रहा है कि ये नंबर 159 लिखा हुआ है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, यू कैन जस्ट इंक्रीज द फॉन्ट, नॉर्मली जैसे हम करते हैं। तो इसको आप साइज बड़ा कर दें और यहाँ जाए होम टैब में एंड यू कैन इंक्रीज द फॉन्ट साइज, ठीक है। तो ये फॉन्ट का साइज बड़ा हो गया, ठीक है। और हमारे को पता है कि टोटल है, टोटल की जरूरत नहीं है, तो आप टोटल वर्ड को हटा भी सकते हैं इफ यू वांट फ्रॉम हियर। तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस and you can just select value, okay। So you will get only the value and sorry, close that. You can remove the other things which you don't want, तो normal delete करके भी आप हटा सकते हैं, ठीक है। now this same formatting I want to apply over here, तो you can go to home tab, एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला बटन दबाइए यहाँ से, और इस बटन को दबाने के बाद when you click on this you have to just apply it over here। I think it not function on the chart, ये इस पे काम नहीं कर रहा है। तो again what you have to do is you can select that box and do the things again, मतलब इसका साइज इंक्रीज कर दीजिए manually by clicking on it, just increase, drag and increase, and then Alt HFS font size पे आ जाएंगे आप, and you can increase the font size to whatever number you want, ठीक है। and Control B तो सबको पता ही है कि bold का शॉर्टकट की है, so you can just click inside and just remove this total and you can make it bold also, Control B के साथ। तो ये आपको डेटा लेबल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। नाउ व्हाट यू वांट इज बेसिकली, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा क्रिएटिव चार्ट बनाए। तो ये कौन सा चार्ट है, इज इट अ कॉलम चार्ट और अ रो चार्ट, टेल मी इट इज अ कॉलम चार्ट और अ हॉरिजॉन्टल रो बार चार्ट। इस चार्ट को आप क्या नाम देंगे बताइए। कॉलम का कॉलम कॉलम चार्ट। चार्ट है ये, राइट। तो आप डिजाइन में जाइए और डिजाइन में देखिए बहुत सारे आपको डिजाइन दिखेंगे यहाँ पे अलग अलग से, ठीक है। तो आप इस तरीके से ले सकते हैं, ऐसा ले सकते हैं बैटरी टाइप, ठीक है। यू कैन मेक अ 3D चार्ट व्हाटएवर, बट इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू अ बार चार्ट, क्योंकि अगर आपने लॉलीपॉप देखा होगा तो लॉलीपॉप जो थी वो स्लांटिंग थी, सो रही थी, लेटी हुई थी, ठीक है। तो आप यहाँ से ही चेंज चार्ट टाइप कर सकते हैं एंड नाउ यू विल सी द बार चार्ट ऑल्सो। So you will see bar chart, you can select a 3D bar chart also, तो आपको इस तरीके के बार भी मिल जाएंगे। नॉर्मल बार चार्ट ले सकते हैं आप, स्टैक बार चार्ट है, ठीक है। तो we'll select the first
bar chart, or maybe this one you can take okay and you can click on okay. ठीक है, तो आपको ये दिख रहा है मेल एंड फीमेल। अब इसको भी अगर रिवर्स करना है इनका पैटर्न, मतलब कि पहले मेल आए फिर फीमेल आए, यहाँ पे तो मेल और फीमेल ही थे लेकिन यहाँ पे फीमेल आ रही है फिर मेल आ रहा है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट स्विच इट, यहीं से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे अलग अलग स्टाइल्स आ रही हैं, यू कैन सेलेक्ट सब एनी। ब्रश हाँ, सब ब्रश वाले ऑप्शन में जाते हैं ब्रश वाले ऑप्शन जैसे में सी। हाँ, फिर ब्रश वाले ऑप्शन में जाके तो नहीं हो रहा है ये। ठीक है, हाउ डू यू चेंज द, सर स्टाइल में शायद होगा, ब्रश के ऑप्शन में स्टाइल में शायद ऑप्शन है। नहीं, देखिए इसमें ऐड में भी जाएंगे तो भी नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा डिजाइन में। ठीक है, इन द डिजाइन यू विल स्विच रो एंड कॉलम। तो अब देखिए अलग अलग हो गए, यहाँ पे वापस आप इस पे क्लिक करेंगे, एक साथ हो गए हैं, है ना। यू कैन चेंज द सीक्वेंस बाय राइट क्लिकिंग इट एंड देन यू कैन सॉर्ट। ठीक है, यहाँ पे भी सॉर्ट का ऑप्शन है, और सीरीज जो आ रही है आप इसको चेंज कर सकते हैं। You can select the series male or female, or you can sort it largest to smallest you can do। तो ये देखिए, ये हमारा चार्ट सॉर्ट हो गया है। ठीक है, तो ये 3D चार्ट बन के आया है। इफ यू वांट टू चेंज द यू कैन पुट द टाइटल, तो हमें टाइटल अगर चाहिए तो हम टाइटल रख सकते हैं, ये सब आपको ग्रिड लाइन चाहिए, टेबल चाहिए, ये सब आप कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ अ चार्ट इज क्रिएटेड इन pivot, this is the pivot chart that we have created। okay, थोड़ा सा इसका एलिवेशन जो है थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है आपको, आप इसको ठीक भी कर सकते हैं। यू कैन इम्प्रोवाइज ऑन दिस चार्ट, दीज आर डिफरेंट थिंग्स दैट वी विल बी कवरिंग। ठीक है, बट दिस इज अ बेसिक चार्ट। आप इसको लॉलीपॉप चार्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दिस इज अगेन अ बिग स्टोरी। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा चाहिएगा, आज ऑलरेडी टाइम ज्यादा हो चुका है, 10:20 हो चुके हैं, तो वी विल जस्ट स्टॉप दिस क्लास ओवर हियर। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे, बट आई होप वॉट एवर यू हैड सीन टूडे इट इज ऑल इंटरेस्टिंग। आज हमने ज्यादा कुछ किया नहीं लेकिन बहुत कुछ कर लिया, क्योंकि हमने बहुत सारी कंसेप्ट्स आज सीखे हैं। सो फर्स्ट वी हैव सीन द फॉर्मूलाज, सम कैलकुलेशंस, उसमें आपने काउंट फंक्शन के 5 वेरिएंट देखे हैं आप। काउंट इफ और इफ्स हमने काम में नहीं लिया, लेकिन हाँ फिर भी हमने काफी सारे फंक्शंस देख लिए हैं, ये बनाया हमने। उसके बाद वी क्रिएटेड द पिवट टेबल, ऑफ द फर्स्ट पिवट टेबल वी अंडरस्टूड हाउ पिवट टेबल आर एक्चुअली मेड। अच्छा, ये जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो पिवट टेबल दिखाई नहीं दे रही है मुझे, तो यू कैन राइट क्लिक एंड यू कैन जस्ट से शो फील्ड लिस्ट, तो आपको फिर से ये फील्ड्स नजर आएंगी सारी। ठीक है, और आप जो भी चेंज करेंगे पिवट टेबल में, ठीक है, सपोज मैं जेंडर डिपार्टमेंट वाइज देखना चाहता हूँ कि किस डिपार्टमेंट से कितने लोग छोड़ के गए थे, तो आप डिपार्टमेंट को भी इंक्लूड कर लीजिए। सो व्हेन यू इंक्लूड द डिपार्टमेंट, नाउ यू विल सी डिफरेंट बार। अब आपको देखिए 3-3 बार दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो 3 बार आ गए, पहले एक एक बार ही था मेल और फीमेल में, अब 3-3 बार हैं। कैन एनीवन टेल मी व्हाट डज दीज 3 बार्स रिप्रेजेंटिंग? यू कैन सी द टेबल ऑल्सो, पिवट टेबल आप देख के बता सकते हैं, आंसर कर सकते हैं कि 3 बार क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। व्हाट आर दी बार्स रिप्रेजेंटिंग? So gray These one is are for sale. representing departments, right? HR, R&D and sales. So that is how you can design your pivot table। अगर हम इसको स्वैप करते हैं, डिपार्टमेंट को डाल देते हैं एक्स एक्सेस में और जेंडर को डाल देते हैं यहाँ पे कॉलम में, तो आपके ये कॉलम वाइज तीनों डिपार्टमेंट वाइज बन के आएंगे। सेल्स में मेल इतना है, फीमेल इतना है, R&D में मेल इतना, फीमेल इतना है, और HR में फीमेल और मेल इतने हैं। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ हाउ द विजुअल्स यू आर क्रिएटिंग, टेबल आप जैसे बनाएंगे वैसे ही आपका चार्ट बन के आएगा। ओके, सो दिस वाज ऑल दैट वी हैड वांटेड टू कवर, और वी हैड कवर्ड रादर। ठीक है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं, लुक गुड। तो देखिए अब आपको ये कॉलम चार्ट में ये दिखाई दे रहा है। तो दिस इज अ वेरी बेसिक पार्ट ऑफ डैशबोर्ड क्रिएशन जो आज हमने कवर किया है इन दिस पर्टिकुलर सेशन। ओके, सो आई हैव जस्ट स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग नाउ, and I'm just closing this Excel file and I'm sharing it with you all in the chat, Zoom chat। तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। See, you will have to take out time to practice things। If you don't practice, you will tend to forget। तो आपको प्रैक्टिस करना है बराबर।
दूसरा एक और important announcement I have for everyone, those who have joined this session, those who are already registered to my course, they are learning Excel with me, okay, and they are getting benefited. वो लोग सेशन में ऑलरेडी हैं. जो लोग आज आए हैं, we are launching a course on dashboard creation. तो मैंने आज आपको एक basic idea दिया है कि what are pivot tables, what are pivot charts. We are going to create a dashboard. We are going to learn how to create a dashboard. तो उसमें आप अलग अलग pivot tables को एक साथ include करके how to insert slicer, how to insert timeline and all these things, that will be covered in that particular course. That course is now available for enrollment in the website. Okay, I have priced it at a very nominal fee of 999. Okay, now you might get a course of on dashboard for 400 also, 299 also, 300 also. But let me tell you, आप खरीदिए वो कोर्स और आप मुझे उसका फीडबैक अपने आप दीजिएगा कि आपने कितने टाइम कितना आपको बेनिफिट मिला है. द कोर्स नेम इज डेटा विजुअलाइजेशन इन एक्सेल. डेटा विजुअलाइजेशन. हाँ, आई थिंक इट विल बी लाइव टू नाउ, और नहीं तो आपको कल तो मिल ही जाएगा ये लाइव. ठीक है, सो यू कैन एनरोल फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स. 999 का कोर्स है. You will get a login ID and password. Once you enroll, once you log in into it, you will be able to see the previous day's session recording. This recording I'll be uploading it today, and next 4 days we'll be continuing with this. So kal ka session will not be an open session, because now those who have enrolled for my course, they should not have that feeling कि we have paid and others are joining by not paying. Okay, and see, it's not about taking a fee and allowing people to join. It is about that you should, if you are deriving any value from any course, from any content, then you should pass on that value to the trainer also. Okay, so it is my bread and butter now, so I cannot do injustice to myself. Okay, so I'm spending my time and creating all these courses for you, so I would like to derive a reasonable benefit from it. Okay, and not a very higher fees I'm charging. There are people who charge, when I take this dashboard session in corporates, I get paid somewhere between 25,000 for 5 hours. Okay, so 1 hour of training cost around 5,000. Okay, the same quality and same material I'm going to use in this course, and I'm just offering it for 1,000. Okay, so take the advantage of it. If you have any doubts relating to this, you can just watch my previous sessions on dashboard on my YouTube channel. Okay, I'm sharing my link also. I share everything in the group, so you are not new to anything. Okay, but whatever doubts you have, you can just talk to me or my team. Okay, but you have to commit yourself to learning. Okay, so I have seen that whenever we do open sessions, people turn up, but whenever we do paid sessions, people don't turn up. But now I have 4 5 participants who have joined my courses. So would you like to share your experience? Niti was not very she was not comfortable with the timings. Okay, so she was not joining the course because of the timing, but now she has joined. Okay, so Niti, would you like to share something about the experience so far which you have done? Shrestha is there, she's a CA student. Gurjot is my student. Avnish is my student. Okay, so before we conclude this session, would you like to share your feedback? Because since a week or 10 days, I think you are studying every day, 9 to 10, you're taking out time. So how you're feeling about it? Sir, I want to say that it is very interactive session. Like yesterday, I missed the class, right? Hmm. So I tried to watch the video and I was trying to understand. So I realized that when I'm in the class, I understand it better. Like I can ask questions. So I find that this is very interactive session, and I've learned so many shortcut keys. Like I didn't know it before. So I'm learning, and it is really like I'm gaining from it. Mm-hmm. Thank you for your feedback. And see, that is why I always say to all the participants of my live sessions that see, there is no comparison between live and recorded. Okay,
So definitely, whenever you attend a live sessions, you get the opportunity to ask questions. And if you are watching a recorded session of mine or any other speaker or any other trainer or howsoever qualified he is, if you're not able to connect to his methodology, his speed, his understanding, तो आपको कहीं ना कहीं वो लेक्चर समझ में नहीं आएगा, चाहे वो फ्री हो या पेड हो, कैसा भी हो, ठीक है, यूट्यूब पे हो या आपने किसी और का लॉगिन लेके अरेंज किया है. सो आई ऑलवेज प्रमोट लाइव लर्निंग, बिकॉज आप अपना इंडिविजुअल डाउट्स पूछ सकते हैं वहां पर, ठीक है. श्रेष्ठा हैज आल्सो पुट हर कमेंट्स इन द चैट बॉक्स, ठीक है, और गुरजोत ने भी लिखा है. सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू कन्वे अ सिंपल मैसेज कि आप चाहे कोर्स करें या नहीं करें, लेकिन जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है टू लर्न लाइव, so you have to devote a particular time slot for yourself to learn things. And once you learn all these things, then you will save lot of hours at your work. So this investment will always pay you return, ठीक है, तो आपको वो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा. There are students, Shrestha is there, she is a CA final student, तो वो आर्टिकलशिप पे भी जाती है, क्लासेस भी जाती है, उसके बाद शी इज वेरी अटेंटिव इन द क्लास एंड शी इज पार्टिसिपेटिंग. So I really appreciate this thing about her. Okay, so the time slot is 9 to 10 every day. Monday to Saturdays we have class. Saturday we have quiz and MOS preparation session. Sundays there are no sessions as such. Saturdays we keep Q&A also. तो मंडे टू फ्राइडे जनरली क्लासेस होती हैं और सैटरडे ओपन सेशन होता है फॉर एवरीवन टू पार्टिसिपेट. ओके, एंड सी द बेनिफिट ऑफ हैविंग joining द कोर्स इज दैट एक तो आपको लाइव एक्सेस मिलेगा, प्लस आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी विच इज वैलिड थ्रू आउट योर लाइफ, एंटायर लाइफ. आप उसकी कोई वैलिडिटी हमने रखी नहीं है कि 6 मंथ्स तक देखना है आपको, या 6 महीने देखना है, 3 साल देखना है, 2 साल, 5 साल देखना है. आप जितना चाहें उतना उसको जब चाहें जब देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं थिंग्स को, ठीक है. सो इट्स अप टू यू, एंड वी कीप ऑन अपडेटिंग द मटेरियल ऑन द community. So what you are paying is just to get an access to the recording, but आपको बहुत सारी चीजें वहां पे और मिलती रहेंगी हमारे से, ठीक है. So you can just make up your mind. कल शाम को 9 बजे से पहले तक आप देख सकते हैं, कोर्स का मटेरियल पूरा वहां पे अवेलेबल है, क्या क्या हम कवर करेंगे. एंड आई एम गोइंग टू कवर 3 डैशबोर्ड्स. एक जो हमने बताया है HR एनालिटिक्स वाला, उसको कंप्लीट करेंगे. देन वन मोर डैशबोर्ड आई विल टीच, दैट इज IPL डैशबोर्ड. उसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस और बहुत सारे फीचर्स होंगे. वन डैशबोर्ड इज विल बी फाइनेंशियल डैशबोर्ड, जो कि जितने भी चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं या जो भी फाइनेंस सेक्टर में है या जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा. सो इफ यू ज्वाइन दिस कोर्स, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू ऑल. और अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि हमने ये कोर्स लिया और हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो यू कैन राइट टू मी, आई विल रिफंड यू द एंटायर फीस, ठीक है. मैं आपको पूरे पैसे वापस लौटा दूंगा. अगर आपको पहले ही दूसरे दिन तीसरे दिन कभी भी ऐसा लगता है कि हमें कोई वैल्यू नहीं मिली है, तो वी हैव पेड दिस फीस एंड वी आर नॉट डिराइव्ड एनी वैल्यू, देन आई विल रिफंड द एंटायर फीस टू यू, ठीक है. So with this, yeah, only registered people will have the access to the recordings. All the live sessions that I do, all the open session that I invite people to, they're always free. We don't charge for this, although it is a part of the course curriculum. But with the permission of my batch, I keep them open. है ना, हम लोग कुछ कुछ ऐसा हर सेशन में मैं ओपन सेशंस रखता हूँ, so that people can feel how they what they will get by attending the course, by buying the course. Okay, so with this, now we will conclude, and Avnish, you would like to conclude it today. Okay, so you can go ahead and do that. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you for joining us today for this online access session on the topic of pivot tables and pivot charts. In just a short span of time, we have covered some essential concepts that can significantly enhance your data analysis and visualization skills. As you leave this session, I encourage you to continue practicing and exploring the vast capabilities of pivot tables and pivot charts. The more you delve into their functionalities, the more proficient you will become in harnessing their full potential. Thank you, sir. Thank you, everyone. Okay, thank you everyone. Good night. Thank And yeah, if you have any questions, you can ask here, or you can write to me on my personal window also. Okay, so
I have shared the file, I guess, or do I have to? I'm just sharing this file again in the Zoom window, so you can download it and you can keep practicing. And hope to see you all tomorrow at 9 p.m. Chaliye. So good night once again. Thank you, sir. Okay. This is so